Morning, dear students. Welcome to the class of Business Studies. Okay, students, our chapter organizing is going on. Organizing is the chapter, organizing is the second function of management. The first function of management is planning. After that, we will discuss the second function of organizing. And we have discussed the process of organizing, meaning, features, etc. So today we will discuss the types of organization. Formal and informal organization. Two types of organizations are there. इनको हम अपना अलग अलग रीडिंग लेंगे तो टेक अटेंशन. The structure of an organization is both formal and informal. In other words, two kind of relationship can be established among the employees. जो employees they are working in the organization उन वो they are related to each other in two manners. Firstly, the relationship that is defined beforehand. एक तरह से तो वो कैसे कनेक्टेड हैं कि वो जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई है, जो पोस्ट उनको असाइन की गई है. सेकेंडली, दोज रिलेशनशिप विच आर नॉट डिफाइंड डेफिनेट एंड डिफाइंड बिफोर हैंड. दूसरा किस तरह से कनेक्ट है वो कि these relationships are self generated. Okay, these are not defined by the organization. ओके तो क्या बताया मैंने आपको. फॉर्मल जिसमें वो क्लियर कट उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं. सपोज दीज थ्री पर्सनस आर सिटिंग हेयर, ए बी सी. ओके, ए इज़ द CEO, B is departmental manager, and C suppose deputy superintendent. These are the posts given by the organization. According to she is the boss of him, he is the boss of him. इनका रिलेशनशिप के ये बंदा इसका बॉस है और ये पर्सन इसका बॉस है, तो दिस इज़ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अब ये बैठ के इकट्ठा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. बट ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम सपोज दे आर हैविंग लंच विद टुगेदर, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये एज अ बॉस नहीं बैठे हैं, तो देन इट इज़ द इनफॉर्मल रिलेशनशिप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Formal organization means an organization in which the responsibilities, authorities, and mutual relationship among all the employees working in an organization are clearly defined. Clearly defined means there is no doubt in anything. Means ए को पता है कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बी को भी पता है, सी को भी पता है, तो ऑल आर क्लियर अबाउट देयर ड्यूटीज़. दिस इज़ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आप एक डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पे. एन ऑर्गेनाइजेशन is formal when the activities of two or more persons are consciously coordinated towards a कॉमन ऑब्जेक्टिव. कि जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव द एक्टिविटीज़ आर सेट इन अ मैनर सो दैट दे कंट्रीब्यूट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. नाउ सी द फीचर्स. Sorry, the first feature is it has defined interrelationship. You can see the three persons na, कि I told you that B is the boss of C, A is the boss of B. तो ये interrelationship है जो ये clearly defined है. Formal organization is a sort of arrangement in which clearly defined mutual relationship, everybody knows their authorities and responsibility. This clearly shows who will be reporting to whom. कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा किसको. तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. This is the feature of formal organization. I think it's clear now. Second, it is based on rules and procedures. The rules and procedure that is decided by the organization
we have to work under that rules and that process. Okay, it is important to observe all the predetermined rules and a procedure in formal organization. The objective laid down under planning are thus achieved. कहता है कि जब सब कुछ हम रूल्स के अंडर रह के करेंगे तभी हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया उसको अचीव कर पाएंगे. ओके. थर्ड, it is based on division of work, of course. When the work is divided, where the work is divided, the work is divided in organizing process. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क डिवाइडेड मीन्स जिसको जो काम मिला है उसी के बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होता है. द चीफ बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिवीजन ऑफ वर्क. इट इज़ दिस it is this that connects the efforts of different department with each other. और यहीं से हमारे जो डिपार्टमेंट्स है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ओके, दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ asking for finance to purchase the raw material to finance department. Okay, sales department is asking for the goods for sale to the production departments. Like, okay, it is deliberately created. Okay, the main point is it is created with very much care. Okay, it is not a organization that is created itself. No, deliberately का मतलब होता बहुत सोच समझ कर, जानबूझकर जिसको हम बोलते हैं वैसे. इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ईजी मैनर. इट इज़ इम्पर्सनल. Personal feelings are ignored and strict discipline is observed. As I told you that in this the work is done under the rules and procedures, so personal feelings को यहाँ पे कोई importance नहीं दिया जाता. It is not the person but the work that happens to be important. यहाँ पे हम person को important नहीं करते, importance नहीं देते. We give the importance to the work that is done by him or her. It is more stable. Changes cannot be introduced because of the need of individual and their wishes. Therefore, it is more stable. In this point, it is told that the organization, the formal organization, it is not changed according to the wish. Suppose I don't want, suppose B is a person who don't like A, तो ये चाहता है कि ये boss ना रहे, but it can't be changed according to his wish. Okay, so this is the feature of, these are some features of formal organization. We will discuss the advantages of formal organization and disadvantages of formal organization in the next period. Okay, so thank you till bye.